हाँ डियर स्टूडेंट्स, कल हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे थे किसी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हम लिखे इफ x2 and yb are two topological species, topological species and f is a function from x to y, and f is a function from x to y. Now if f is continuous at x0 belong to h, sequence xn is continuous at x0 belong to h, then it is sequentially compact on this point. Then it is sequentially compact then it is sequentially compact or is sequentially continuous on this point. Then it is sequentially continuous on this point. Okay. देखिए प्रूफ में f x से y में एक फंक्शन है where x and y are topological spaces. Where x and y are topological spaces. Here f is continuous at x0 here f is continuous at x0, then we wish to prove that f is sequentially continuous f is sequentially continuous at x. Sequentially continuous at x0, i.e. आप ऐसे भी कह सकते हैं
if xn is a sequence in X and xn converges to x0 and xn converges to x0, then fxn is a sequence in Y fxn is a sequence in Y which converges to fx0, i.e. fxn converges to fx. ओके, चलिए इसके लिए मानते हैं फॉर दिस रेट H is an open set in Y and for x0 belong to X and for x0 belong to X, fx0 belong to H. That means x0 belong to f inverse H. ऐसे भी लिख सकते हैं, f inverse ऑपरेट करेंगे because H ओपन सेट है Y का और F कंटीन्यूअस है ऑलरेडी, तो F इनवर्स H भी कैसा होगा, ओपन होगा X में. also because इसे बंद कर लीजिए, H is open in Y and F is continuous and F is continuous, so F inverse H is open in X. F inverse H is open in yes X and x0 belong to कितना F inverse H. also xn converges to x0 also xn converges to x0 then show open set F inverse H contains all the terms of sequence xn
contains all the terms of sequence xn except few terms. Except few terms, i.e. xn belong to F inverse H. xn belong to F inverse H. That means fxn belongs to H. fxn belong to H. Also, fx0 belong to H. So fxn converges to कितना fx0 n tends to infinity के लिए, and so f is sequentially continuous, and so f is sequentially continuous. Sequentially continuous. F is sequentially continuous. Okay, it should be. तो ये है हमारे continuous और sequentially continuous की definition, और टोपोलॉजिकल स्पेस में उनमें क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने थ्योरम के फॉर्म में बताया। चलिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा। एग्जांपल 1 लिखिए। सपोज करिए X एक स्पेस है जिसमें 4 एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। एंड सपोज करिए 2 जिसमें 5 है, X है, सिंगलटन एलिमेंट 1 है 2 है 1 2 है 2 3 4 है। दिस निश्चित रूप से एक टोपोलॉजी है। इज ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन X। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है टो में या सेट है टो में। इज ए टोपोलॉजी ऑन X। चेक कर सकते हैं आपको। इज ए टोपोलॉजी ऑन X। Also if f is a function from x to x such that f1 is equal to 2, f3 is equal to 2, f2 is equal to 4 and f4 is equal to 3। थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड। देन शो इसमें दो सवाल बना देता हूं मैं। नंबर 1, f is not continuous at 3। f is not continuous on 3
एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट 4, ये दिखाना है आपको, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 4, f is continuous at 4. चलिए दिखाते हैं जरा, हमारा स्पेस है 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं उसमें, और इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, 5 है, 1 है, 2 है, 2 एलिमेंट 1 2 वाला एक सेट है, 3 एलिमेंट 2 3 4 वाला एक सेट है, और x है। ये टोपोलॉजी है x में, और इसका ये मतलब है कि इसमें आने वाले एलिमेंट या सेट्स क्या होंगे, ओपन होंगे, किसमें x में, या सिंपली ओपन भी नहीं कहा जा सकता है, such that f1 is equal to 2, f2 is equal to 4, f3 is equal to 2 and f4 is equal to 3. ओके, देन फर्स्ट के लिए देखिए, f is not continuous at 3. Here only open set 1 2 is here, which contains f3 is equal to, which contains f3 is equal to, also अगर f इनवर्स 1 2 देखें तो 1 तो रह ही जाएगा, डिफाइन नहीं होता उनसे, और f इनवर्स 2 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 3, इट शुड बी, इज द ओनली ओपन सेट is the only set which is not contained in any open set, which is not contained in any open set, i.e. not open. इसका मतलब ये हुआ कि f3 इज इक्वल टू 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट 1 2 है, लेकिन उसकी f इनवर्स इमेज ओपन नहीं है, दैट मींस f इज नॉट कंटीन्यूअस एट 3, सो f इज नॉट कंटीन्यूअस एट 3. So f is not continuous at 3. Yes. Now we check the continuity of this function at 4. Now at 4, second
एट 4। फोर को कंटेन करने वाले ओपन सेट एक तो 2 3 4 है और x है। नाउ 2 3 4 और x में तो सब आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड x आर दी ओपन सेट which contains F2 is बल्कि 4 पर दिखाना था ना, which contains F4 is equal to 3, जिस पर ये डिफाइन होता है। 3 को ये भी कंटेन किया हुआ है और x में तो आएगा ही, दोनों के दोनों कैसे हैं, ओपन है। आल्सो हियर F इनवर्स 2 3 4 जरा ध्यान दीजिए, F इनवर्स 2 यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। F इनवर्स 3 यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। और F इनवर्स 2 यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। और F इनवर्स 4 F इनवर्स 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। भाई F इनवर्स 2 कितना 1, F इनवर्स 2 कितना 3, ठीक है। F इनवर्स 4 कितना 2 और F इनवर्स 3 4, ठीक। ये चीज बन गई। और व्हाट इज दिस इज x। आल्सो निश्चित रूप से कंप्लीट स्पेस x और एम्प्टी स्पेस i दोनों के दोनों ओपन भी माने जाते हैं, होते हैं बल्कि इनफैक्ट, और क्लोज्ड भी होते हैं। एंड F इनवर्स x इज कितना, x, राइट। और ये कैसे हैं, ओपन है। भाई ये भी कैसा है, ओपन, x है, ओके। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, ओपन है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि F4 जो कि 3 के बराबर है को कंटेन करने वाले दोनों ओपन सेट 2 3 4 और x की F इनवर्स इमेज भी x में कैसी है, ओपन है। एंड शो F इज कंटीन्यूअस एट 4। अंडरस्टैंड। तो कैसे दिखाना है कंटीन्यूअस, और सीक्वेंशियल कंटीन्यूअस होता ही है। अभी प्रूफ किया है मैंने कि अगर कंटीन्यूअस है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई फंक्शन है तो वो सीक्वेंशियल कॉन्टैक्ट भी होता है। एंड शो F इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4 एंड शो F इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। इस टाइप से आप दिखाते हैं, ओके। इट शुड बी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखिए। If RU and RV are two topological spaces,
f is a function from R to R, and f is a function from R to R, defined as fx is equal to 1, fx is equal to 1, यही मान लीजिए। Then prove f is continuous. Then prove f is continuous. Then prove f is continuous. Okay? Yes. दिखाएं निश्चित रूप से R से R में है, टोपोलॉजिकल स्पेस तो जो बनते हैं और हाँ यस f केवल इस पर डिफाइन होता है 1 पर, इस पर डिफाइन होता है 1 पर। नाउ if G is an open set in R, then F inverse G R के बराबर होगा कब, अगर 1 बिलोंग करता है G में, निश्चित रूप से चूंकि हर R 1 पर परिभाषित होता है, और फाई के बराबर होगा अगर हाँ यस 1 डज नॉट बिलोंग टू G। अंडरस्टैंड, समझते हैं ना? क्योंकि हर इमेज 1 पर परिभाषित है तो F इनवर्स 1 x बिलोंग टू R पूरा R आ जाएगा, और अगर G में 1 नहीं आता तो फिर R का कोई भी एलिमेंट यानी एम्प्टी सेट आएगा। Also we know that R and phi both are the open space। क्यों? ये पूरा स्पेस है और phi एम्प्टी स्पेस होता ही है। Also we have that R and phi are open। That R and phi are open। So F inverse G is open in R while G is open। While G is open in R, while G is open in R, and so F is continuous। And so F is continuous। ओके, चलिए एक एग्जांपल करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन on topological space। Characteristic function on topological space। Okay, suppose करिए let x2 is a topological space। Let x2 is a topological space
E is a subset of X. Then characteristic function defined on E. Characteristic function ये इसे रिप्रेजेंट जनरली करते हैं अगर ई के लिए है डिफाइंड ऑन ई एज के ई एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई and 0 for every x belong to x minus e. Understand? This is known as the characteristic function defined on set. Okay? कल कंटिन्यूस करेंगे इसके ऊपर एक थ्योरम और उसके बाद फंक्शन f की डिफरेंट प्रॉपर्टी जिनमें से होमोमॉर्फिज्म इस लेसन में डिस्कस करेंगे. ओके?